A very good morning to all of you students. Today we are going to continue with chapter number 2, that is basic accounting terms. I would request you to have a notebook, pen with you so that whenever I am going to write something you can make notes out of it. The next accounting term that we are going to study is trade receivables. Trade receivables. Just first of all write with me, what is this? It is the amount receivable. It is the amount receivable for sale of goods and or services या फिर आप बोल सकते हो it is the amount due from the customers of the enterprise. Now what it says, it is what? It is the amount, वो amount which is yet to be received. अभी आपको वो पैसा मिला नहीं है. The amount that is going to be receivable. क्यों? क्योंकि आपने कुछ goods सेल किए थे या कुछ services सेल करी थी. So basically it is an amount which is due. अभी due है, किन से due है? From our customers of the enterprise. Now this equation, if I say, write down this. Trade receivables is equal to debtors plus bills receivables. Okay? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बच्चे? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इसी में ही हम पढ़ने वाले हैं आपकी टर्म डेटर्स. In the beginning of the chapter we started with a person named A. So this person has a business A Limited, right? ये इनका business था. Now for example there is some person, say XYZ. This can be a person also, or maybe an enterprise, a company. Okay? Now this person, because whenever we are going to study, we are going to study from the point of view of our business. So let's say that A Limited has sold goods worth rupees 1 lakh to XYZ, right? And this goods that have been sold is on credit basis. उधार पे आपने किसी कंपनी या किसी इंसान को goods बेचे हैं. So whenever you are going to sell the goods and services to the person, you are going to in return ask कि when you are going to give the money. For example, he says that he is going to pay you the money after 6 months, right? After 6 months. So for those 6 months, this XYZ is called your debtor. For these 6 months, जब तक वो पैसा नहीं देता, वो कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए क्या कहलाया जाएगा बच्चों? डेटर. वो चाहे पर्सन हो चाहे वो एंटरप्राइज हो, क्योंकि हमें इस इंसान से पैसा लेना बाकी है. लेट्स रिवाइज योर अर्लियर कंसेप्ट्स. जहाँ से भी पैसा आना बाकी है या पैसा लेना बाकी है उसको हम क्या बोलते थे?
we used to call it asset. And because the debtors are basically those people who are, or person, company are going to give money within less than 1 year, so these are your current assets. Okay, तो ये आपको याद रखना है that debtors are our current asset. Why? Because we have sold them. तो यहाँ पे आपने एक और टर्म पढ़ी है, credit sales. Clear? Now the term that is bills receivable we are going to study. Write down the next point. Trade payables. Because it is to be paid, so it is the amount payable for पे करना, इसका मतलब आपने कुछ खरीदा होगा, for purchase of goods or या and services, right? So what is it? It is the amount due to whom now? Due to the seller of goods or by the company, by the enterprise. Now these trade payables are equal to your creditors plus bills payable. Okay students, trade payables is equal to creditors plus bills payable. Now let's see what are creditors. This is our point 8a. Again, let's take an example over here students. This is our business under the name A Limited, and let's take this is a XYZ, another company, right? Now we are going to purchase the goods from them. Okay, we are going to purchase the goods from XYZ Limited. Last time we were selling the goods, this time we are purchasing the goods, say rupees 2 lakhs, and all these purchases are on credit basis. उधार पे हमने सामान खरीदा है. Now in return I am promising to XYZ that I will pay this amount in time period of say 8 months. Okay, now very importantly, this particular XYZ can be a person again or can be a enterprise, right? जिनसे हम सामान उधार पे खरीदते हैं, एक तो सबसे पहली बात, we have to pay back them, right? हमें इनको पैसा वापस देना है, तो कंपनी के लिए ये क्या हो गई, एक liability हो गई. Yes, it is a liability for them which has to be paid in a time period of say 8 months or less than 1 year. So this is again your current liability. Okay, and this person for this time period, जब तक हम इनको मनी नहीं दे देते, तो वो XYZ हमारे लिए क्या कहलाया जाएगा? He will be called or she will be called, or the company, it will be called as the creditor. So creditor is basically a person or an enterprise to whom an enterprise, this A Limited, to whom an enterprise owe
द अमाउंट अगेंस्ट, हमें वी आर गोइंग टू ओ द अमाउंट अगेंस्ट व्हाट, क्योंकि हमने क्या किया है, वी हैव डन अ क्रेडिट परचेज। तो इसकी डिफाइन क्या है, हु आर क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अगेन अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज owes an amount against what, against the credit purchases. ओके जैसे यहाँ पे कौन है, XYZ is a creditor. Now students, let's understand the concept of bills of exchange, because if I'll make you understand that, then it will be very easy for you. Bills of exchange is a document, ओके, इट इज़ बेसिकली अ रिटन ऑर्डर, इसको हम रिटन ऑर्डर बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो दिखता कैसे है, दो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी फर्दर चैप्टर्स। नाउ अभी क्या हो रहा था, अब मैं डेटर्स का फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमारी कंपनी थी ए लिमिटेड, हमने XYZ को क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पे कुछ गुड्स बेचे। सपोज़ मैंने उनको गुड्स बेचे 1 लाख रुपीज़ के। अब जब मैंने उनको गुड्स बेचे तो क्या मैं ऐसे ही सेल कर दूंगी, मेरे पास भी तो एक तरीके का प्रूफ होना चाहिए कि XYZ इज गोइंग टू पे मी दिस। सपोज XYZ इज सेइंग टू मी दैट दे आर गोइंग टू पे दिस 1 लाख रुपीज इन 6 months, but I need to have this proof in written. So what I am going to do, I am going to make a bill of exchange. This here I am going to write, for example, New Delhi. Suppose today's date is 11th of May 2020, ठीक है, मुझे इनसे 1 लाख लेने हैं, सो आई एम राइटिंग रुपीज़ 1 लाख, एंड यहाँ पे एक स्टैम्प भी है गवर्नमेंट की, ठीक है, वैलिड स्टैम्प इज़ देयर। देन आई एम राइटिंग 6 months आफ्टर डेट, मतलब 11th मई के बाद जो 6 months की डेट आएगी, पे टू ए लिमिटेड, मुझे पे करो, या फिर हो सकता है मैंने किसी और को बोला हो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो किसी और को पे कर दो, जो भी मैं इंसान बोलूँगी वो पेई, उसे पेई बोलते हैं, उसका मैं यहाँ नाम लिख दूँगी, पेई द सम ऑफ 1 lakh rupees only, वैल्यू रिसीव्ड। ये ऑर्डर मैंने बनाया और मैंने भेज दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए लिमिटेड, एंड देन आई हैव साइन दिस डॉक्यूमेंट वट एवर, एंड फाइन जिसको ये पे करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ लिमिटेड और यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो उनके पास ये पोस्ट हो जाएगा। नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू पोस्ट टू दिस XYZ. Now when they are going to see everything and they are going to agree, अगर वो agree कर देते हैं इस चीज़ को, accept कर लेते हैं, for their acceptance they need to sign it. So they are also going to say sign it. Now this bill is very valid document. इसकी बहुत ज़्यादा importance है, ये एक ऐसा order है। order किसने दिया? बनाने वाले ने, कि आपको ये बिल पे करना है इतने टाइम के बाद। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि ए लिमिटेड को, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए लिमिटेड को पैसा मिलना है फॉर दिस, फॉर ए लिमिटेड इट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल्स, एंड बिकॉज दिस पर्सन नीड्स टू पे फॉर दिस कंपनी और दिस एंटरप्राइज, इट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल. Is it clear? Now let's go to the meaning of it as written in the book. See students, bills receivable की definition, bills receivable means a bill of exchange which is accepted by a debtor. जिसने पैसे देने थे वो debtor था और उसने वो bill accept किया है, the amount of which will be received, जो बाद में मुझे मिलेगा on a specified डेट. तो मेरे लिए बोला गया, कंपनी के लिए बोला गया कि आपको पैसा मिलेगा. सो दिस इज अ बिल्स रिसीवेबल. एंड सी व्हाट इज बिल्स पेएबल? इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और द एंटरप्राइज
by the person or the enterprise, the amount of which will be payable, जो वो पे करना है, जो पे करेगा उसके लिए bills payable है. This is also a current liability. इसको भी हम current liability बोलते हैं. And this particular thing, bills receivable, the amount which is, ये भी amount मिलना है on a specified date and that date is not going to be more than 1 year. So this is also your current good, current asset. I hope these 4 terms are now clear. Now trade receivables is sum of debtors plus bills receivables and आपको debtors और bills receivable का define पता लग गया है. And next is trade payables. This is also a sum of creditors plus bills payable. Okay.